अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल एक ऐसे बेस पे है जो कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है या लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते एक साथ से, वो कैसे डील करते हैं अपने जो टाइज़ होते हैं उनको, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया या फिर दूसरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। ये आर्टिकल आज का उसी बेस पे है, इस पे एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें ये है कि जो ट्रायल्स ख़राब हुए हैं या कन्फ्रंटेशन होती है उनको थ्रू डिप्लोमेसी के तरीके से जो हम उनको सॉल्व करें, उनको डील करें, उनसे डिप्लोमेसी से वो जो है टाइल्स को जो भी है नॉर्मल टाइल्स करें, उनको जो कन्फ्रंटेशन है उनको नॉर्मल करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस। द मेजर रीज़न फॉर इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया is the continuous cultivations of a mistrust between the two countries, i.e. Pakistan and India. Some attempts were made to build a mutual confidence, but they were never enough to help countries establish a normal and a good neighboring relationship. The absence of a sustained dialogue, the unresolved Kashmir dispute, the failure of both countries to deal with the menace of terrorism have kept South Asia unstable. उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कंट्रीज़ डीलिंग विद कन्फ्रंटेशंस विदाउट अ डायरेक्ट वारफेयर। ये आज न्यू नॉर्मल का है ना, तो इस पे ये एग्जांपल है कि मैनी कंट्रीज़ हैं उनके जो भी हैं वारफेयर हुई है, कन्फ्रंटेशन हुई है, उन्होंने कैसे डील किया है, पाकिस्तान और इंडिया कैसे डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कोल्ड वार बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। हैविंग विटनेस कोलोसलर डिस्ट्रक्शंस caused by US bombings of Hiroshima and Nagasaki in 1945, the world community resolved that a nuclear weapon must never be used again, ठीक है ना। 1945 के बाद जो है ना न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी नहीं हुआ और ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिटी है ना जो वो उसको प्रोहिबिट करती है। उसके बाद द न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी आ गई 1968 में। 1968 द रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, देन द US, UK, Soviet Union, France, China to retain their nuclear weapons on the condition that in due course they would disarm their nuclear arsenal. The bargain over NPT, non-proliferation treaty, was short-lived as none of the 5 nuclear weapons states made efforts to disarm. Instead of nuclear war erupted between US and Soviet Union in the form of a nuclear arm race. There were fears that a cold war between the two countries could morph into a direct war, but that never happened because they recognized that outcomes would be mutually assured destruction. इससे साबित ये हुआ कि ये इनकी कन्फ्रंटेशन एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वार का नहीं सोचा, ठीक है ना, वार पे नहीं गए। द ओनली टाइम दे केम क्लोज टू काइनेटिक कन्फ्रंटेशन वाज ड्यूरिंग द Cuban Missile Crisis in 1962. All along, diplomacy was used to manage their conflicts. The diplomatic parties lead the signing of treaties on limiting strategic arms. Number 2 पे है Soviet occupations of Afghanistan. During the Soviet occupations of Afghanistan, the US did not confront the Soviets with its own troops and instead used proxies through the मुजाहिदीन के थ्रू उन्होंने जो है ना अफ़गानिस्तान से सोवियत को निकाला। उसके बाद है US invasion of Iraq and sanction on Iran. The US invaded Iraq despite stiff international condemnations, sanctions Iran on concerns about its nuclear program. During this phase, no direct confrontation took place between nuclear weapons. इनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस नहीं हुई है। अभी ईरान की भी देख लें, ईरान वर्सेस US की, तो डायरेक्ट आमने सामने नहीं आते, थ्रू प्रॉक्सीज़ या थ्रू अदर वेज़ के थ्रू जाते हैं ये। या उसके बाद है US चाइना राइवलरी या ट्रेड वार भी कहें जिसे, या उसमें भी ट्रेड वार है। लेकिन टुडे द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग इंटेंसिफाइंग US चाइना कॉम्पिटिशंस एंड द US हैज़ मेड alliances with India, Australia, Japan and others to contain Chinese right. However, the
two have so far refrained from engaging in a direct warfare. Number 5 पे Russia-Ukraine war. In a Russia-Ukraine war, NATO and the US have avoided fielding their own troops, leaving it to the Ukrainians to fight with the West military and economic support. ये देख लेना, इसमें भी वेस्ट का सपोर्ट था, लेकिन वेस्ट ना एक डायरेक्ट कन्फ्रंट पे नहीं आया, उनकी सपोर्ट ज़रूर किया, उनके बैक किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया. Experience of India and Pakistan while delaying confrontation, intermittent confrontations. Since the nuclearizations of our region in 1998, India and Pakistan both are intermittently engaged in conventional confrontations, including 1999 clash in Kargil, 10-month-long military standoff in 2002, behind the scene diplomacy, and often the help of third parties helped cool off tensions and avert an all-out war. उसके बाद है surgical strikes against Pakistan. In September 2016, India announced that it had carried out a surgical strike against Pakistan. The strike had not happened in reality, and at that point, most analysis conducted that India was essentially testing the waters for a new normals in a bilateral relations, whereby it could strike Pakistan without provoking a nuclear response. In February 2019, India did carry out a surgical strike in Balakot on the grounds that it was targeting a militant training camp, although there was no such camp there and only some trees were hit. Such strikes by one nuclear state against another represented precautions situations unique to South Asia. उसके बाद है नंबर 3 पे continuous cultivations of mistrust. The major reason for instability in South Asia is the continuous cultivation of mistrust between India and Pakistan. PM Modi appears to be striving for a Hindu Rashtra in India and has been persistently aiming at marginalizing and isolating Pakistan. These efforts continue to hamper prospects of a peace and are making South Asia a high-risk zone of strategic instability. उसके बाद है India and Pakistan would need to learn from the parties of other nuclear weapons states, which realized that early on that trying to win in a nuclear environment has more costs than benefits. Its diplomacy is given an uninterrupted chance. South Asia, like other parts of the world, could achieve strategic stability that can allow the region to prosper. This is new normal that both countries should aspire to. ये न्यू नॉर्मल क्या है कि जो भी मैनी कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंसेशन होती हैं, लेकिन वो थ्रू डिप्लोमेटिक वेज पे, डिप्लोमेसी के थ्रू पे न वो उनके न्यू नॉर्मल टाइज कर देते हैं. ये बेसिकली ये है कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं करते. पाकिस्तान और इंडिया को करना चाहिए, ठीक है. ये एक हाई रिस्क है, दोनों एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है ना. तो कन्फ्रंटेशन होगी तो फिर जो है ना रीजन को भी ख़तरा है, इन दोनों को भी ख़तरा है, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस को भी जो है ना ख़तरा है. आई होप आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफ़िज़.